हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली इफ़ यू आर अ ट्रेडर, वेदर यू आर पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग, इंट्राडे, इवन इफ यू आर स्कैल्पर। ऑल ऑफ अस नो दैट ट्रेडिंग एक बहुत ही ज़्यादा मेंटल गेम है। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ गुड ट्रेडर along with a good trading system, यानी कि good strategy, risk management and many other things, you need to understand what all mental difficulties you're going to face. And if you know those difficulties from the start, तो जब आप एक्चुअली उसको फेस करोगे, अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको पता लगते जाएगा, ओके यस, ये मैंने सीखा था, कहीं सुना था, एंड आई हैव टू बिहेव इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज मोर और लेस trading is a lot about behavioral science. Okay, so first thing is that trading is a lot about mental strength and weakness. आप एक बहुत ही अच्छे स्टॉक पिकर हो सकते हो, एक बहुत ही अच्छे एनालिस्ट हो सकते हो, और शायद आप जो भी एनालिसिस करो मार्केट में वो प्रोबेबली हो सकता है, बट जरूरत नहीं कि अगर आप एक अच्छे एनालिस्ट हो तो आप एक अच्छे ट्रेडर भी हो, बिकॉज मेंटल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मेक्स अ ट्रेडर और ब्रेक्स अ ट्रेडर. सो इनिशियली जनरली ये न्यू कमर्स जो होते हैं, न्यूबीज जो होते हैं मार्केट में, उनको ये डिफिकल्टी ज्यादा होता है. एंड देन विथ टाइम, विथ एक्सपीरियंस, जैसे ही उनको पता चलता है ओके दिस इज अ मिस्टेक, ये वापस नहीं होना चाहिए, तो धीरे धीरे विथ टाइम, व्हेन दे आर लर्निंग विथ एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम समवन एल्स, दे विल गेट बेटर विथ टाइम. सो आज मैंने 8 मेंटल ट्रैप्स मैंने पॉइंट आउट किए हुए हैं आज के वीडियो में. तो हर एक पॉइंट को मैं उठाऊंगा, थोड़े से डिस्कशन करेंगे एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, और ये वीडियो को लास्ट तक देखिए. यू माइट फाइंड आउट बाय रीडिंग दिस माइंड मैप, ओके आई हैव 1 or 2 डिफिकल्टीज, बट अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज कंफर्मेशन बायस. कंफर्मेशन बायस का मतलब क्या है कि समझिए कि आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक लिया हुआ है या आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक लेना है, तो आप ज्यादातर नेट पे या कहीं भी आप किसी से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से, कलीग से, कजिन से, या आप यूट्यूब सर्च कर रहे हो. इफ यू आर बुलिश अबाउट अ पर्टिकुलर स्टॉक, you will try to find views and topics and blogs which are giving positive views related to that stock. And if there is any other information which is negative, यानी कि कोई ऐसी information नेट पे आपको अवेलेबल है विच इज अगेंस्ट योर व्यू, अगेंस्ट योर थॉट प्रोसेस अबाउट अ पर्टिकुलर स्टॉक जो आप लेके बैठे हो या तो लेने वाले हो, देन यू विल ट्राई टू इग्नोर दैट पर्टिकुलर नॉलेज. यहाँ पे ये मैंने देखिए मेंशन किया हुआ है, सीकिंग इंफॉर्मेशन और ओपिनियंस दैट सपोर्ट्स योर आइडियाज और प्री कंसीव्ड नोशंस एंड इग्नोरिंग certain information that is contrary, यानी कि opposite to what you have. सो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस. कभी भी मेरे हिसाब से एज अ ट्रेडर, यस, व्यू होना जरूरी है. इवन इफ यू आर अ सिस्टम ट्रेडर, आई एम मोर ऑफ अ विजुअल ट्रेडर. लाइक आई हैव माय पर्टिकुलर व्यू, and if my system gives a trigger, I'll probably buy or short that particular stock, but I will never try to find confirmation from somewhere else. If I go wrong, it's fine, I'll try to come out of that trade, but I'm not going to hold on to my trade just by saying that whatever I have analyzed is right. That's it. सेकेंड थिंग इज ओवर कॉन्फिडेंस. देखिए ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, दिस इज वेरी डेडली. किसी भी फील्ड में, नॉट जस्ट इन ट्रेडिंग, एनी फील्ड, ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी डेडली. जनरली इन ट्रेडिंग व्हाट हैपेंस इज, जो सीजन ट्रेडर्स होते हैं, पुराने ट्रेडर्स होते हैं, उनको ये चीज पहले से पता है दैट मार्केट में विनिंग स्ट्रीक्स और लूजिंग स्ट्रीक्स ये चलते ही रहता है. यू कैन हैव मल्टीपल ऑफ विनिंग ट्रेड जिसमें आपने बहुत बड़ा पैसा कमाया, एंड सडनली मार्केट का जो चलने का तरीका है वो चेंज हो गया. मार्केट बिकेम चॉपी, मार्केट बिकेम प्रोन टू फ्यू मोर इवेंट्स, कुछ और बाहर के इवेंट्स आ गए. जैसे कि अभी आई थिंक आज मार्केट क्यों नीचे आया, निफ्टी वाइडेड, निफ्टी केम डाउन, देयर वाज little bit of war sort of situation, and more than that I believe it was the negative job data which was released by America. So कुछ भी हो सकता है, right? So if you had taken a particular trade say day before yesterday in an index or any other stock, और आज वो स्टॉक नीचे आ गया, इफ यू वेर ओवर कॉन्फिडेंट तो आपने उसको बहुत ज्यादा लेवरेज करके ले लिया होता कि नहीं ये स्टॉक तो चलेगा ही, या निफ्टी तो ऊपर, यहां से ऊपर ही जाएगी, नीचे आ ही नहीं सकती. दैट इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस. इफ यू आर अ ट्रेडर, ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है दैट एट टाइम्स न्यूबीज विद जस्ट फ्यू प्रॉफिटेबल ट्रेड्स
start feeling overconfident about their abilities as a trader, यानी कि मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं जो गलत हो ही नहीं सकता, या तो जो मैंने ट्रेडिंग सिस्टम या जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने डिप्लॉय किया है मेरे ट्रेडिंग अकाउंट पे या मेरे पैसे पे, वो कभी गलत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होता है। यू कैन बी रॉन्ग फ्यू टाइम्स, यू विल बी right few times. In the end, you will make money when your profits are bigger than your losses. And if you are a person who is trading a slightly different type of strategy, which has slightly higher win rates, then your risk reward ratio will be less. But ऐसा कभी नहीं होगा कि 10 में से 10 ट्रेड आपके चलेंगे. So overconfidence is fatal. Always be humble to the market. If you're wrong, exit. If you're right, book profits. ये भी मत सोचिए कि नहीं मैंने 100 रुपए पे लिया है, मेरा टारगेट 110 है, तो मैं 110 पे नहीं निकलूंगा, मुझे लगता है ये स्टॉक 150 पे जा ही सकता है। नो, इफ योर स्ट्रैटेजी सेज कि अगर 110 पे निकलना है तो 110 पे निकल जाइए, यू विल गेट अ बेटर ट्रेड, यू विल गेट अ न्यू ट्रेड। ऑलराइट, नाउ अवॉइडिंग लॉसेस, ये तो बहुत कॉमन है और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लाइक वी ऑल नो दैट इन ट्रेडिंग अपार्ट फ्रॉम ब्रोकरेज, लाइक पहले तो ब्रोकरेज बहुत ज्यादा हुआ करता था व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन 2006-7, ब्रोकरेज काफी ज्यादा था। आज के टाइम पे ब्रोकरेज काफी छोटा हो गया है। सो द सेकंड आई थिंक कॉस्ट इन ट्रेडिंग इज probably the charges which you pay to the government, and your brokerage is very small. The stop losses are the main cost, and I believe every business has a cost. Like if you have a shop, if you are in the manufacturing industry, तो शायद आपको लेबर का कॉस्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते होंगे, बैड डेप्स होते होंगे, वो भी एक कॉस्ट है बिजनेस का, एंटरटेनिंग क्लाइंट्स, मीटिंग्स, ट्रैवलिंग, सबका कॉस्ट लगता है। यहाँ पे कॉस्ट एक ही है, योर स्टॉप लॉस इज द कॉस्ट टू डू बिजनेस। नाउ इज देयर एनी बिजनेस जो आप कंटिन्यू कर सकते हो जिसमें कोई कॉस्ट है ही नहीं? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो ये आपको समझना पड़ेगा दैट स्टॉप लॉसेस आर स्टॉपिंग योर लॉसेस टू गेट बिगर। यानी कि अगर आपने एक ट्रेड इनिशिएट किया, उसमें अगर आपका स्टॉप ट्रिगर हो गया, ट्राई टू गेट आउट ऑफ दैट स्टॉक और इंडेक्स एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज उसमें आपको दो नुकसान हो रहा है। नंबर वन, हो सकता है कि वो स्टॉक अगर आपने लॉन्ग किया है और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो हो सकता है कि अगर आपने एग्जिट नहीं किया, स्टॉक और नीचे चला जाए, आपके लॉसेस बढ़ जाए। सेकेंड थिंग इज, अगर स्टॉक नीचे नहीं भी जाता है, द मोमेंटम इज ओवर इन दैट स्टॉक, दूसरे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो पैसा निकाल के आप शायद किसी और नई पोजीशन में डालो और वहां पे मोमेंटम हो तो वहां से आप पैसा कमाओ। So you are doing losses in two ways. One is opportunity cost. Second one is the loss which you have incurred due to a trade and which you have not covered the losses. That is the reason आपके losses बढ़ते जा रहे हैं. So this is what you need to understand. You cannot avoid losses. Yes, you can try to limit your losses by trading less in volatile markets, by trading little in range bound markets, or maybe hedging your positions, maybe doing some manual intervention, but completely avoiding losses, it's not possible. If you want to make money, you should be ready to face small stop losses in the trading career. All right, now ये बहुत बड़ा है, और ये वाला जो पॉइंट है फोर्थ, दिस हैपेंस जनरली स्पीकिंग with newcomers. क्यों? The reason is when a person, because me being a mentor, I am talking to so many students daily. What happens is and even when I was new, I had in fact faced this issue. ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, और इसमें से सबको बाहर निकलना है। Fear of initiating trades means you know what is happening in the market. आपको चार्ट पे सब कुछ दिख रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है। समझो कि आपको लग रहा है कि समझो ये पर्टिकुलर XYZ सेक्टर इज एक्सट्रीमली बुलिश एंड यू शुड बी इनिशिएटिंग लॉन्ग ट्रेड्स। आपके सिस्टम में ट्रिगर भी आया, आपने एनालिसिस भी किया, आपने ट्रेडिंग होमवर्क भी किया, प्रोबेबली यू डिड होमवर्क नॉट जस्ट वंस, बट आपने वो स्टॉक को बार बार देखते रहे जस्ट टू गेट एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कि मेरा एनालिसिस कहीं गलत तो नहीं हो गया। व्हाई? बिकॉज आई एम न्यू इन द मार्केट। इट्स फाइन, इवन आई हैव डन इट, बट at one point of time, the next day when the market opens at 9:15, आपको बटन पंच करना है, आपको प्रेस करना है बटन to buy that stock or in derivatives, whatever you are trading. But if you do not do that, what is the point of analyzing? What is the point of you being such a good analyst? What is the point of
learning technical analysis. What is the point of having a very good trading system? Because you cannot make money if you do not initiate trades. And if you initiate trades, there will be few trades which will give you money. There will be few trades which will probably give you losses. But at the end of the year, you will see some positive outcome in your trading account if your trading system is robust, you follow all the rules with complete discipline, and you manage your emotions. But if you cannot manage your emotions, the third point which I'm saying, and if you do not initiate trades, it's not going to happen for you. Understand this. So यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? Now this one sounds similar to avoid losses, but it's not. Avoiding losses जो चीज है ये अलग है. मैंने बोला था ये स्टार्टिंग में कि शायद एक या दो पॉइंट ओवरलैप करेंगे. अवॉइडिंग लॉसेस मतलब आपने ऑलरेडी एक लॉन्ग पोजीशन बना लिया है, उसका स्टॉप ट्रिगर हो गया है, नाउ यू आर अवॉइडिंग टू टेक दोज लॉसेस. आप स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं कर रहे हो. यहाँ पे फेयर ऑफ इनिशिएटिंग ट्रेड्स मतलब आप ट्रेड इनिशिएट ही नहीं कर रहे हो. बोथ आर फियर्स बट ऑफ टोटली डिफरेंट टाइप. ओके, एंड दिस वन, स्पेशली दिस वन, ये वाला जो है ना, ये न्यूबीज में बहुत कॉमन होता है. ये वाला जो है अवॉइडिंग लॉसेस, दिस आई हैव सीन इन इवन पीपल हु हैव बीन इन द मार्केट फॉर 10 years, 15 years, they cannot do this. But ये नए लोगों में थोड़ा सा ज्यादा मैंने देखा. All right. Now, fear of missing out. I think ये आपको भी पता होगा. If you are a trader, if you have read a little bit about FOMO, I think all of us know this. Now, FOMO or fear of missing out reflects the psychological aspect of trading where traders are driven by emotions rather than objective analysis. Now, see, you are a human being, even I am a human being. And it happens in the market because there are so many sectors, so many stocks. It can happen that you may have missed one or two trades, or maybe 2 to 3 trades from a particular sector, or maybe a couple of different sectors. It can happen because आपकी position तभी किसी और सेक्टर में स्टॉक में थी और मे बी आप कंप्लीटली मिस कर गए. अगर आप कंप्लीटली मिस कर गए तो उसको आप एक्सेप्ट करिए और देखिए कि ये नेक्स्ट टाइम ना हो. बट do not try to initiate a trade when that stock or that index has already rallied considerably और आप बहुत ही हायर पोजीशन पे जाके, हायर रेट पे जाके आप उसको इनिशिएट कर रहे हो. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर इनिशिएटिंग अ ट्रेड बिफोर अ ब्रेकआउट, इट्स डेंजरस. If you are initiating at a breakout, when the breakout happens, it is fine, it's perfect. But if you're initiating at a point जब stock बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, then the chances of making money is lesser. बिकॉज आउट ऑफ 10 ट्रेड्स, देखिए 5 या 4 तो आपके स्टॉप लॉस में चले जाएंगे. बाकी के जो आपके ट्रेड्स हैं, 5 या 6 ट्रेड्स, उसमें से सब ट्रेड्स बहुत बड़े प्रॉफिट वाले नहीं होने वाले. देयर विल बी 50% ट्रेड्स विल बी एवरेज प्रॉफिटेबल and the rest 30% trades, they will be extremely big because I am more of a trend follower. So I'm talking about my trading strategy, my trading ideology. तो वो बहुत बड़े ट्रेड होंगे. बट जो छोटे ट्रेड्स हैं उसमें आपने हायर पोजीशन पे ले लिया, then it's not going to work for you because वहां से मार्केट शायद टर्न आउट कर सकती है. So if you have missed something, missed a stock, missed a rally, it is fine, it is all right. भूल जाइए उसको. बट ये ध्यान रखिए कि नेक्स्ट टाइम ना हो और कैसे ना हो उसके ऊपर काम करिए. बट अवॉइड इनिशिएटिंग ट्रेड एट अ वेरी हायर लेवल. दिस इज डेंजरस बिकॉज कैसा होता है कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब आपने इनिशिएट किया है ना, एंड इफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड गोज फॉर अ लॉस, आपका शायद लॉस उतना बड़ा नहीं होगा. बट व्हेन द मार्केट इज टॉपिंग आउट, लिसन टू मी केयरफुली, व्हेन द मार्केट इज टॉपिंग आउट एंड टर्निंग अराउंड, दैट टाइम इफ यू विल सी द वोलेटिलिटी स्पाइक्स, द वोलेटिलिटी इज बिग. सो इफ दैट टाइम इफ यू इनिशिएट अ ट्रेड, आपके स्टॉप लॉसेस ज्यादा बड़े होंगे देन नॉर्मल सिनेरियो. आपके स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे. ये ध्यान रखें, ठीक है. Revenge trading. Now, this could be little bit surprising for few of you जिन्होंने ये फिनोमेना नहीं सुना है, बट मैंने ऐसे ट्रेडर्स को देखा है और मैं मिल भी चुका हूं. Now, revenge trading is a type of trading that is irrational, erratic, and simply done in anger, in a fit of anger, because some traders are unable to remain calm in such times. Now, at times when a trader loses a big amount, क्या होता है? जब भी एक ट्रेडर का एक बड़ा अमाउंट लॉस होता है, forget about discipline, forget about your trading strategy, just as a human being, forget about trading in the stock market. आपको कहीं भी एक लॉस हुआ है, as a human being, you would always want
कि आपका लॉस जितना हो सके जल्दी कवर हो जाए, करेक्ट? यस, मैं भी यही चाहता हूं, बट क्या ये हो सकता है? नो, इन स्टॉक मार्केट नहीं होता और रियल लाइफ में भी नहीं होता अनलेस एंड अंटिल यू आर एक्सट्रीमली लकी. सो व्हाट हैपेंस इज इफ यू कैन be aware of your emotions and you know that whatever emotion, whatever thought you have got in your mind right now is wrong, it's not going to work out, then you will possibly try to stop yourself and you will not initiate a very big trade with a very big leverage ये सोच के कि अभी मेरा बड़ा लॉस हुआ है, मैं और एक बड़ा ट्रेड लेता हूं with big leverage एंड मैं पूरे लॉसेस एक या दो ट्रेड में कवर कर लूंगा, उसके बाद भगवान कसम मैं सट्टा नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल ट्रेडिंग करूंगा with very less. In fact, I will not take even exposure more than 1x on my trading account. But बस भगवान एक बार मेरा लॉस कवर करवा दे, इसमें भगवान भी काम नहीं आने वाले. You have to understand if you have lost big money. First of all, you have lost big money because of your mistake, which means you are on a losing streak. So you need to be careful, need to trade small, get out of your losing streak, and it's going to take time. It's not going to happen like that. थोड़ा सा टाइम लगेगा. एंड देन व्हेन यू सी कि समझो कि मैंने 15% का लॉस कर दिया या 20% का लॉस कर दिया मेरे पूरे ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसमें से अगर आधा भी आपका कवर हो जाए, देन यू कैन लिटिल बिट स्केल अप, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा. बट immediately do not try to scale up way too fast. It can be extremely dangerous for your trading career, not just your trading account but for your trading career. Okay, now again this one, seventh point, is very common. होल्डिंग लूजर्स एंड एग्जिटिंग विनर्स. ये शायद सबको आपको पता ही होगा, बट आई जस्ट लाइक टू रिपीट इट. सी, बेसिकली व्हाई majority of the people in markets are not good traders, why they do not make money, why very little amount of people make money in trading, whether it is position trading, whether it is long term trading, whether it is intraday trading, whether it is scalping or even swing trading. The reason is normal human behavior is not going to work in the markets. The way you are wired, the way you are made as a human being. Human beings are emotional people and there is no place for emotions in the market. Humans are pathetic traders. Only if you have an anti-human behavior, you will be successful in the market. Imagine कि आपने कुछ भी अलग दूसरा एसेट खरीदा है apart from stock market. अगर उसमें लॉस होता है, ask yourself, do you sell it out or you hold it? थोड़ा सा भाव बढ़ जाएगा तब मैं बेच दूंगा, राइट? यही थॉट आता है दूसरे किसी भी एसेट क्लास में. एंड देन जब प्रॉफिट होने लगता है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, प्रॉफिट होने लगता है, देन पीपल सेल इट आउट इन द स्टॉक मार्केट. व्हाई? बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ वेरी डायनेमिक सॉर्ट ऑफ एसेट क्लास compared to real estate or gold. The volatility in the equity markets is very high. So what do people feel? Not think but feel. अगर आदमी सोचता तो शायद ये इतनी गलती नहीं होता. आदमी ये सोचता कि पहले मैं सीख लूं फिर करूं, लेकिन आदमी सोचता नहीं, क्या करता है, फील करता है और कर देता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है या मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक बढ़ चुका है, ऑलरेडी मैं बड़े लॉसेस में हूं दूसरे स्टॉक्स को जिसको मैंने होल्ड किया हुआ है, और जो स्टॉक लॉसेस में है उनको वो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स बना देता है अपने आप से ही, खुद के ही वैलिडेशन से. ठीक है, और जिसमें प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा बहुत भी, उसको बेच दो, नहीं तो प्रॉफिट चला जाएगा. और होता क्या है, जो स्टॉक्स आपने होल्ड करके रखे हैं वो ऊपर नहीं जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, और जिनको आपने बेच दिया वो बहुत ऊपर चले गए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. होल्डिंग लूजर्स नहीं होना चाहिए, होल्डिंग विनर्स होना चाहिए, एंड एग्जिटिंग losers. It should be completely opposite. And this happens over a period of time. This cannot happen like this. It's a mental game and it will take time to entirely, reverse your thought process. And then it will happen over a period of time. But once it clicks, then there is no looking back. The last one is gambler's fallacy. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और पहले मैं ये पढ़ूंगा फिर आपको मैं समझाता हूँ. The gambler's fallacy, also known as Monte Carlo fallacy, occurs when a trader believes that a random event is less likely or more likely to happen based on the outcome of a previous event or a series of events. Now, इसको मैं एक एग्जाम्पल में समझाना चाहूंगा कि समझ लीजिए एक ट्रेडर है, वो लगातार पैसे तोड़ रहा है, कंटिन्यूस ही इज लूजिंग, कंटिन्यूस, एंड ही इज लूजिंग बिग. समझो कि
10 लाख का अकाउंट है एंड ही इज कंटिन्यूसली लूजिंग से 20,000, 30,000, 40,000 पर ट्रेड, और कंटिन्यूसली उसके 5-6 लॉसेस या समझो 8-9 लॉसेस हो चुके, ठीक है, एंड ही हैज लॉस्ट 20 to 30% of his account. A person who is going through this gambler's fallacy, what he will think that इतने तो मुझे लॉसेस हो चुके हैं, अब तो मुझे लॉस होने से रहा, अब मैं कितना और नीचे गिर सकता हूं, यहां से तो ऊपर ही मैं बाउंस बैक करूंगा, राइट? व्हाट हैपेंस, ही टेक्स अ वेरी बिग पोजीशन, बहुत बड़ा पोजीशन ले लेता है, और जैसे ही वो बड़ा पोजीशन लेता है, अनफॉर्चुनेटली विदाउट, बिकॉज ही इज इन अ फिट ऑफ एक्साइटमेंट दैट आई वांट टू कवर माय लॉसेस वेरी फास्ट, इसलिए उसने बड़ा पोजीशन लिया है। एंड व्हेनेवर यू ट्रेड विद एक्साइटमेंट इन द मार्केट, whenever your trading is extremely exciting, you're bound to lose money, and then again he loses a very big amount in the stock market. So this is very very important कि if you are losing money continuously, सबसे पहले दो चीजों की ध्यान रखिए। नंबर वन, अगर ये थॉट आपके दिमाग में आता है कि मैं अभी कंटिन्यूसली लॉस कर रहा हूं तो अभी इससे मैं नीचे नहीं जा सकता, दिस इज नॉट ट्रू, यू कैन कंटिन्यू टू लूज मनी। ओके, सेकेंड थिंग इज, समझिए कि आप एक चार्ट पे बैठे हैं और आपको दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर इवेंट पे एवरी टाइम द मार्केट इज बिहेविंग इन सच अ वे, और से फॉर एग्जांपल आरएसआई जब भी ये पर्टिकुलर स्टॉक में 80 के ऊपर गए तो स्टॉक नीचे आ गया, अगर वीकली चार्ट्स में 80 के ऊपर गए तो डेली चार्ट्स में करेक्शन आया। जरूरत नहीं है कि 8 बार हुआ है तो 9वीं बार ये होगा, उल्टा भी हो सकता है। मे बी दैट स्टॉक इज टर्निंग अराउंड, मे बी और ज्यादा रैली हो जाए, हु नोज। So what I'm trying to say is that market में कभी भी कुछ भी हो सकता है, it cannot be predicted, you can only react or respond to the situation in the market. Understood? So never have preconceived notions about the recent event in the markets and how markets will behave. All right? So आज का जो वीडियो था, जो मैंने माइंड मैप यहाँ पे बनाया दोस्तों, I hope it was a very very helpful video for all of you. Do let me know with your comments below, आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं, did it help you to become a better trader, and if you feel yes it has helped, then share it with other traders as well so they can also take benefit from this video. All right, trade less, trade wisely. Thank you.